The hyperbola x square upon a square minus y square upon b a square is equal to 1. X square upon a square minus y square upon b square is equal to minus 1 are said to conjugate or to each other of if E and E prime are the eccentricity of the hyperbola and its conjugate proof that 1 upon e square plus 1 upon e square is equal to 1. eccentricity को इसके स्क्वायर पे 1 पर डिवाइड करने और ऐड करने से इक्वल टू 1 आता है. कॉन्जुगेट ये प्रूव करना वी हैव टू प्रूव दैट कि 1 अपॉन eccentricity square add with the same quantity I upon 1 upon the eccentricity square is equal to 1. Solution. Eccentricity is the point of a hyperbola or parabola or ellipse, a minor axis and the major axis, and third between these lines, or C. C is a point of eccentricity shown by A cross E is equal to A cross E. The eccentricity of E of the hyperbola x square upon a square minus 1 y square upon b square is equal to 1. We will here demonstrate b square is given by b square is equal to a square into e square minus 1. We have to prove and b square upon in question number 23. B square upon a square is equal to e square minus 1 is equal to 1. The eccentricity e prime bar of the conjugate hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to minus 1 is given by a square is equal to b square e prime square minus 1, that is a square upon b square is equal to e prime square minus 1 given the third equation. Multiplying 1 and 2 together, we know e square minus 1 e square minus 1 is equal to 1, or e square prime e square is equal to e square plus 1 upon e square, that is the 1 upon e square plus 1 upon the e square is equal to eccentricity. Now question number is hence proved. Question number 26 showed that the sum or asymptotes of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, and the lines drawn from any point of the hyperbola parallel to the asymptotes from the parallelogram to a constant a b upon 2. Solution. Let p, x and y be the point on x square upon a square upon y square upon b square. यहाँ हमारे पॉइंट है हाइपरबोला, हमारा हाइपरबोला है. हाइपरबोला एनी पॉइंट p x1 y1 p and q r is a parallelogram parallel to hyperbola and asymptotes from the parallelogram. Parallelogram and asymptotes from asymptote is a point of constant of the equation or coefficient of the equation which intercept the p and x and y, or we have an equation which cuts the intercept or intercept the x-axis or y-axis, x and y-axis at point. The point which intersect or the x-axis or y-axis. Find this point. These are the asymptotes. Let's x1 and y1 be the asymptotes definition. And any point of an x square upon a square minus y square upon b square is a equation of hyperbola is equal to 1. Equation of the asymptotes of the hyperbola are y is equal to b upon a x. So we will put and y is equal to minus p upon a x. Equation of asymptotes is equal to equation of the lines p are parallel to the line to point. A point given है, slope find करनी है.
then we will use y minus y1 is equal to minus p upon a x minus x1. Solving 1 and 3, this is our x equation and this is y. Point 1 equation, y minus y1 is equal to m x minus x1. Here m is equal to, from equation 1, b upon a, y is equal to minus b upon a. 2 points, solving 1 and 3. Y is replaced by bx, b minus x minus y, b minus x प्लस p अपॉन ए एक्स, यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे बी एक्स अपॉन इज इक्वल टू बी अपॉन ए एक्स, वाई को रिप्लेस यूज़ करते हुए बी अपॉन ए एक्स इज रिप्लेस बाय दिस. सॉल्विंग करेंगे 2b अपॉन ए एक्स इज इक्वल वाई वन प्लस बी अपॉन ए एक्स वन, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन 2p वाई वन प्लस बी अपॉन ए. सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से ये हमारी टर्म डिनोमिनेटर में चल जाएगी वाई वन प्लस बी अपॉन ए एक्स वन. सो वी वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए टू ए बी, ए अपॉन टू बी वाई वन प्लस बी ए एक्स वन is equal to 1 upon 2 y1 plus b upon a x1. There are the coordinates of the point R. The line PQ parallel to PQ is parallel to the line 1 meets at asymptotes 2 at Q. We need the area of a parallelogram OQRPR. OQ and PR. This is a parallelogram OQPR. Required area parallelogram is equal to 2 area of a triangle of congruent to area of 2 congruent triangle OPR. 0 0 1 x1 y1 and 1 upon 2 y1 plus b y1 upon a upon 2a y1 plus b a x1 1. यहाँ हम पॉइंट जो गिवन इक्वेशन है पुट कर देंगे. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ हमारी ट्राइंगल बनती है P एनी पॉइंट O P R. ज्वाइन करें इन्हें. O P R एरिया ऑफ O P R फाइंड करने के लिए मेथड 0 0 1 x1 y1 ओरिजिन पर 0 0 1 पॉइंट y1 and 2 only one is from the row R1 से हम एक्सपेंड करते हुए 0 0 0 एंड होल 1 से करेंगे x1 y1. सो यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. डिटर्मिनेंट फाइंड करने से और सिंप्लीफाई करने से x1 2a x1 ay प्लस bx1 माइनस ay ax1 y1 से आर्बिट्रेरी और एलिमेंट्री प्रोडक्ट. सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 2a एंड बी स्क्वायर x1 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर. सिंस x1 अपॉन a स्क्वायर minus y1 b square whole square is equal to 1 is also equal to cut 2ba is the answer and constant of the area of a parallelogram. The hyperbola parallel to the asymptotes from a parallelogram of constant area AB upon 2 is proved. Some step.